Yes, students. So now we take an example. It's a very famous example. So first, suppose farmer produces 50 kg of wheat, 50 kg of wheat and sells it for rupees 500 to miller. ओके 50 केजी जो व्हीट है उसने प्रोड्यूस की और उसको 500 रुपीज में मिलर को सेल कर दिया. ओके तो उसने मिलर को सेल किया है 500 रुपीज में. तो फॉर फार्मर बिट ऑफ रुपीज 500 इज अ फाइनल प्रोडक्ट and if intermediate cost of for farmer is to be 0, then his value added will be rupees 500. तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू एडेड कितनी हो जाएगी? ये 500 रुपीज. ओके ये उसका वैल्यू एडेड हो जाएगा इसका फार्मर का. ओके देन आफ्टर दैट miller for miller wheat is an intermediate good. So miller convert wheat into flour and sells it for rupees 700 to a baker. So sells flour, okay, for rupees 700 to the baker. Okay, baker. So students यहाँ पर क्या है? Now flour of rupees 700 is the final product for the miller. Miller के लिए final product है जो उसने 700 रुपीज में सेल की है. And value added by miller is value added. Yes, value added by miller is equal to 700 minus 500 is equal to rupees 200. ओके तो ये 200 रुपीज उसने वैल्यू एडिड किया उसमें. नाउ द नेक्स्ट इज बेकर. सो फॉर बेकर flour is an intermediate good. So baker manufactures bread from flour and sells the entire bread to final consumer for rupees, yes, for rupees 1000 consumer. Okay, sells bread for rupees 1000. Okay, so bread of rupees 1000 is the final product for the baker. So now the value added by baker, value added by baker, value added by baker is equal to 1000 minus 700. This is rupees 300. Okay, students. Now, yes, now this is output wheat, flour and bread. Okay, and value of output, yes, wheat में rupees 500, then flour के rupees 700 and in bread rupees 1000. Okay, students. Now value of input is equal to, yes, wheat में कितने value of input? 0. Okay, 0. And in flour wheat is equal to rupees 500 and in bread flour is equal to rupees 700. Okay, now the value added. So students, value added will be, this is rupees 500, here rupees 200 and here rupees 300. Okay, so in this example, wheat is a final product for farmer, flour for miller and bread for baker. So as a general practice, every producer treats his commodity as a final output. हर एक जो प्रोड्यूसर है वो अपनी कॉमोडिटी को एज अ फाइनल आउटपुट उसको ट्रीट करता है. इट मीन्स
total value of output, it means total value of output is equal to 500 plus 700 plus 1000 is equal to rupees 2200. Okay, this is total value of output. This is total value of output 2200. So now a careful examination reveals that each transaction contain the value of intermediate good. हर एक में intermediate good की value जो है वो उसके अंदर है. So the value of wheat is included in the value of flour, and the value of flour is included in the value of bread. So as a result, the value of wheat and flour are counted more than once. तो हमने क्या करा, जो wheat and flour की जो value है वो हमने एक से ज्यादा बार काउंट कर दी. So this caused the problem of double counting. यही हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, एंड इट लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. So in order to know the correct value of national income, we must avoid this problem of double counting. So students, how to avoid the double counting? How to avoid the double counting? How to avoid it? So we have two methods, okay, two ways for avoiding the double counting. The first is, yes, first is final output method, and second is value added method, Okay, students, so first final output method. So according to this method, sum total of value added by each, final output method, according to this method, value of only final goods should be added to determine the national income. जब भी आप national income को निकालें तो सिर्फ आप final goods की जो value है उसी को ही आपने add करना है in the final output method. Okay, so in the given example, in the above example, value of bread is equal to, yes, is equal to rupees 1000, na? 1000. Okay, sold to the final consumer. So it should be taken in the national income. हमें केवल इसी 1000 रुपीज जो ये फाइनल गुड है ना, ये फाइनल गुड की वैल्यू है, तो सिर्फ हमें इसे ही लेना है. ओके स्टूडेंट, सिर्फ हम इसे ही लेंगे और किसी को नहीं लेंगे. क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आउटपुट मेथड. Okay, now the next is value added method. Yes, value added method. So student, in this method, sum total of value added by each producing units should be taken in the national income. हम यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन हुआ है ना, हर एक जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं हमारी, हर एक के वैल्यू एडिशन का हम टोटल सम लेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए. तो जैसे इन द अबव एग्जांपल, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, वैल्यू एडेड by farmer is equal to rupees 500. Okay, and the value added by miller is equal to rupees 200. Okay, then value added by baker is equal to rupees 300. Okay students, so now the total value addition is, total value added is equal to 500 plus 200 plus 300. This is rupees 1000. Okay students, so this 1000 should be included in the national income.
Clear? Now students, some of the now we can say कि some of the value added, some of the value added is equal to sum of factor income. Sum of factor income. How? So students, production means addition of value of the input. Okay, through combined efforts of various factors of production. क्योंकि हम प्रोडक्शन किन से करते हैं? जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ओके, उनका यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं. इट मीन्स कि वैल्यू एडिड, इट मीन्स वैल्यू एडिड और net value added of factor cost is nothing but the contribution made by different factors in the production process. ये net value added at factor cost और कुछ नहीं है, केवल क्या है? contribution made by different factors in the production process. Production process में जितने भी हमारे different factors हैं, land, labor, capital, enterprises, उन्हीं के द्वारा ये contribution बनाया जाता है. So every individual factor has a right to get back a share for the value added to the input. तो हर एक individual factor को ये right होता है कि उसको वापस में अपना share मिले. So the producer it distributes this net value added at factor cost among the owners of factor of production as rent, wages, interest, and profit. So it is rightly said that sum of the value added is equal to sum of factor income. Okay. Now students, we take an example ki how to calculate the national income by value added method. Yes students, so now we take an example. On the basis of following data about an economy which consists of only two firms, find out first value added by firm A and B. Okay, and second, gross value added or gross domestic product at factor cost. Okay students, so now items are given. For items जो given है हमें, first sales by firm A, rupees in lakh, this is 100. Now second, purchase from firm B by firm A, purchase from firm B by firm A. Okay, this is 40. Third is purchase from firm A by firm B. This is 60. Now sales by firm B. This is 200. Okay, now closing stock. Yes, closing stock, fifth. Closing stock of firm A. This is 200. This is 20. And sixth transaction is closing stock of firm B. Closing stock of firm B. This is 35. Then 7. Opening stock of firm A. Opening stock of firm A. This is 25. Now
8th, opening stock of firm B. This is 45. Now this 9th is indirect taxes. Indirect taxes paid by both firms. Paid by both firms. This is 30. Okay. So now students, first of all, we calculate the value added by firm A to make value added by firm A and firm B. Okay. तो पहले तो हमें दोनों का value added by firm A and then after that value added by firm B. So now first is value added by firm A. Okay. So this is, so first of all, we take first sales by firm A. Okay. Now अब हम इसमें देखेंगे कि परचेजिंग जो है इंटरमीडिएट गुड जो है वो क्या है. इंटरमीडिएट गुड जो फॉर्म के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए. जो फॉर्म बी से उसने परचेज किया ए ने वो उसका क्या हो गया इंटरमीडिएट कंजप्शन. सो नाउ माइनस परचेज ऑफ परचेज फ्रॉम फॉर्म बी. Firm B, second, okay, firm B. Now after that we take the change in stock, okay, change in stock, closing stock of firm A this one and opening stock of firm A this one, okay. So now plus change in stock, okay. Now putting the values in this. So putting the values in this, first sale by firm A 100, this is 100 minus purchase by from firm B 40 minus 40 and then plus change in stock. Change in stock, how to calculate it? Closing stock minus opening stock. Okay, so closing stock is 20 minus opening stock is 25. Okay. Now solve this 100 minus 40 plus अंदर कितना है आपके पास -5. -5. Okay. Now solve this equation. So now we get 55 lakh. This is the value addition of firm A. Now the second is value added by firm B. So first of all, value added by firm B. Yes, this is first sale by firm B. Sales by firm B. Okay, minus purchase from A and then plus change in stock. Okay. Now sales by firm B 200 minus purchase from firm A कितना 60 minus 60 plus change in stock. Closing stock of firm B 35 and opening stock 45. So 35 minus 45. Okay, and then we get rupees 130 lakh. Okay, now the next what we calculate value added by firm A and firm B. ये हमने निकाल लिया है. Now the next is gross value added or gross domestic product at factor cost. Okay, so gross value added कैसे निकलेगा? आपको जब ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना है या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है स्टूडेंट आपको. सो ग्रोस वैल्यू एडेड बी ग्रोस वैल्यू एडेड जो ग्रोस वैल्यू एडेड और यू कैन से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. GDP at factor cost. So how to calculate it? So now first of all value added by firm A जो हमने अभी निकाला है प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. अब आपको मैंने बताया था कि जब हम सबका वैल्यू एडिशन कर लेते हैं तो वो हमारा क्या आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अब हमें जीडीपी तो निकालना है, निकल गया यहाँ से जीडीपी.
लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा क्या आ रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको हमने फैक्टर कॉस्ट में लाना है। तो फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो हमने देखेंगे ऊपर हमें क्या गिवन है, ऊपर हमें देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है। हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज में से क्या गिवन है, हमें सब्सिडीज भी गिवन नहीं है, हमें ये इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, किसके, दोनों फर्म्स के। ठीक है, तो हमने ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर देने हैं यहाँ पर माइनस। सो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय both firms. Okay, so yes, so 55 value added of firm में 55 lakh plus value added by firm B, this is 130 and minus this in indirect taxes 30, so minus 30, and then we get 155 lakh rupees, 155 lakh GDP at factor cost. Okay, students, so this is our answer. So that's all for today. Have a good day.